Good morning, student. Today we discuss about in fourth chapter we discuss about Ampere's law. Ampere's law. In previous video we have to discuss about BSL, Biot-Savart law. Today we discuss about the Ampere's law. Ampere's law states for closed surface. सपोज इसमें बहुत सारे करंट फ्लो कर रहे हैं. सपोज in any closed surface there are the certain currents enclose that surface. Okay, so electric, it states that the line integral of magnetic field, it is called the line integral. इसका magnetic lines of force है. The direction of magnetic field is B and we are taking the small element dl. The dot product of B dot dl, integration for the dot product of B dot dl is called line integral of magnetic field. Line integral of magnetic field, okay, for the closed surface. So it states that the line integral of magnetic field is always equal to this mu naught times of the total mu naught times of sum of current enclosed in that closed surface, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट करंट होगा तो B डॉट डी एल इज ऑलवेज इक्वल टू it is always equal to mu naught times of the total current including in that closed surface. It is the line integral. If we consider H is the magnetizing field, H is the magnetizing field, then it is a relation between magnetizing field H is equal to mu naught H equal to B. So we substitute here, then we get the H dot dl for the closed integral is always equal to I, and this term is called magnetomotive force, MMF, magnetomotive force. So it is the Ampere's law, B dot dl line integral of magnetic field is always equal to mu naught times of the total current. Okay, and if we are taking the H as a magnetizing field, then mu naught H is equal to B. It is the relation between magnetic field and magnetizing field. Magnetizing field are those field strength by which any magnetic substance any magnetic substance will get magnetized. It is the capability to magnetize any magnetic substance. Okay, so now application for the Ampere's law. First application. There are the three applications: for the straight conductor, for the cylinder and toroids, and we have to also discuss about the solenoid. But solenoid is not in a course, but we will be discuss. Application इसका क्या है? सबसे पहला application to determine
to determine the magnetic field due to long straight current carrying conductor of infinite length. Okay, so magnetic field long straight conductor, we have a long straight conductor, this one. Okay, ये हमारा long straight conductor है, and we have to find the magnetic field intensity at a distance r. It is the application of Ampere's law. Application of Ampere's law. Ampere's law. So here we have a straight conductor. हमने बायोट-सावर्ट लॉ से भी इसको निकाल सकते थे फाइनाइट लेंथ का. It is the application of Ampere's law. इसलिए हम लोग एक एम्पियर लूप कंसीडर करते हैं इसमें, because Ampere's law is always for the closed surface. So B is there and dl is also. Let I be the current in a long straight conductor of infinite length. P be the point at a distance r from conductor. We consider as a circle, we consider an Amperian loop. As a cylinder, as a circle of radius r. Therefore, B dot dl is equal to mu naught I, but theta is 0 in this case, because both are in same direction. So therefore, B dl is equal to mu naught times of the total current, and it is equal to B 2 pi r is equal to mu naught I. So B equal to mu naught I by 2 pi r. It means B inversely proportional to r. Okay, if we draw the graph, then it will be r and it is the B. So B inversely proportional to r. It means it is a hyperbolic graph. So it is the first case and first application. Okay, we take the next application. Determine the current carrying long cylinder of current carrying cylinder. Long current carrying cylinder. It is a very important expression. Current carrying cylinder. First, it is the cylinder. We draw a cylinder. हमने एक cylinder बना लिया.
ठीक है, अब से ऐसे करते हैं, सिलेंडर यहाँ ले लेते हैं, सिलेंडर it has a current I, R is the radius. देखो इसमें हमारा डीसी करंट फ्लो कर रहा है और डीसी करंट इसके इट ऑलवेज फ्लो एट द एवरी पार्ट ऑफ द कंडक्टर, वाइल इन केस ऑफ एसी ओनली करंट फ्लो ओनली ऑन द सरफेस, उसको कहते हैं स्किन इफेक्ट, सिर्फ उसके सरफेस पे फ्लो करता है, जबकि डायरेक्ट करंट इसके हर पार्ट से फ्लो करता है। तो यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं एक पी पॉइंट विच इज एट द आउटसाइड। तो पहला लेते हैं एट आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, दैट इज आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। लेट I is the current in cylindrical conductor, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ले लिया, ये आर पॉइंट है। यहाँ हम एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करेंगे बिकॉज इट इज द केस ऑफ, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ Ampere's law. So we consider Amperian loop having the B and dl. R, the distance between center of cylinder and point. Okay, we consider a small circle of radius r as an Amperian loop. As an Amperian loop. Now we consider the small part dl. Therefore, B dot dl is equal to mu naught I. Here angle is theta, so mu dl is equal to mu naught I, and which is equal to B into 2 pi r equal to mu naught I. So we have a B is equal to mu naught I by 2 pi r. It is the magnetic field B inversely proportional to R, same as a state conductor. Okay. Now we take second case. On the surface, it means R equal to R. Put the R equal to R because it is already circular closed surface. It is already the closed surface, that is the capital R. So B will be equal to mu naught I by 2 pi r, which is a constant and maximum value. ठीक है. Now we consider at the inside. Now we are taking at the inside. Suppose it is at P dash at r distance inside the conductor. Inside the cylinder we consider a small area. It is the small area. That is the r dash. Okay. We consider the small area. और यहाँ पे हमने के एम्पेरियन लूप और भी बनाएंगे. एज अ एम्पेरियन लूप वी कंसीडर द DL और यहीं हमारा B भी लगेगा. ठीक है. थर्ड केस में R डैश लेस देन R,
that is the inside the cylinder. ठीक है, inside the cylinder we consider a small small circle of radius r dash from r dash as Amperian loop. We also consider the small value dl. Therefore, B dot dl is equal to mu naught I dash. I dash is the current in a small part of area, क्रॉस सेक्शन. नाउ वी हैव अभी बताया आपको कि टोटल ये करंट हर पार्ट में डिवाइड होता है इसमें, तो ये पूरे में हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ये छोटे से पार्ट में कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें फाइंड करना है. सो नाउ वी टेक द अनदर mu dash I, but I dash is equal to I by, we are taking the I upon area, total area, that is the current density, and pi r dash square. So we have a I dash is equal to I r dash square by capital R square. Substitute this value in this equation. Therefore, we have a B dl is equal to mu naught times of I r dash square by capital R square. But dl is what? It is the 2 pi r dash. So it is equal to mu naught I r dash square by r square. It is will cancel out. So B will be equal to mu naught I r dash by 2 pi r square. 2 pi r square. That is B directly proportional to r dash, because capital R is constant. Okay, so as we move from center to outward, the magnetic field will be increases and it will be the maximum at the surface, and after that it again reduces as a V inversely proportional to R. So maximum is always found at surface of the cylinder. If we draw the graph for this, now we draw a graph. अब हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. पहला कंडीशन है R ग्रेटर देन R में, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है. दूसरा R इक्वल टू R, और तीसरा है हमारा R डैश लेस देन R इनसाइड, और इस केस में B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश आ रहा है. ठीक है, अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं. ये हमारा कैपिटल R है, ये R ग्रेटर देन R आउटसाइड हो गया, ये हो गया हमारा इनसाइड का. ठीक है, इधर हमने R लिया है, इधर है B. B विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B. स्ट्रेट लाइन इनसाइड B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश, B directly proportional to R dash, and it is inversely proportional. B inversely proportional to R. So it is the graph for in case of cylindrical. Now we consider, now we take the another application, that is the solenoid. Another application is solenoid. Okay. So solenoid is what? Solenoid is nothing but insulated cover copper coil wounded over an iron core or air, as like this one. That is the cylinder.
solenoid. If copper, if insulated coated copper coil, insulated coated copper coils wound over an iron core or air core and current flow through it. Then it behave as bar magnet. Behave as a bar magnet. And it is called solenoid. बात समझ में आ गई कि सोलेनॉइड क्या होता है कि यदि मान लो कॉपर कोटेड कॉइल को हम वाइंड अप करें किसी आयरन कोर पर या एयर कोर पर एंड करंट फ्लो थ्रू इट, देन इट बिहेव एज अ मैग्नेट. The end from which the current is flow is behave as south pole and it is the north pole. So it is a solenoid. ठीक है. The end from which current flow is behave as north pole and other end at which current is coming out behave as north pole. It behave as the bar magnet. bar magnet ऐसा होता है, it is north and it is south, so it is also behave as a south to north. It is also behave as a this one. जिस एंड से करंट एंटर किया इट बिहेव एज अ साउथ और जहाँ से बाहर निकला इट बिहेव एज अ नॉर्थ. अब इसमें मालूम है मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे जाती है आती है, बाहर तो हमारा नॉर्थ टू साउथ होता है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है. ऐसे इसमें भी होगा, मैग्नेटिक लाइन्स इसके इनसाइड में तो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, और बाहर ये नॉर्थ से साउथ आएगा. तुम्हें मालूम है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, तो इसमें भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैक्सिमम नियर द पोल. मैक्सिमम जो होगा वो पोल के पास होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज नो मैग्नेटिक फील्ड outside of solenoid because no flux can pass through this surface. इस सरफेस के थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस के अलॉन्ग कोई भी फ्लक्स पास नहीं होता है, ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड फाउंड एट end of the solenoid, both end of the solenoid, both end of solenoid, दोनों सोलेनॉइड के दोनों एंड पे मैक्सिमम होता है इसमें अट्रैक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फाउंड इनसाइड द
सोलेनॉइड समझ गए बात को? मैग्नेटिक फील्ड फाउंड inside the solenoid, inside it, and it is maximum near both end. ठीक है, because inside the magnetic lines, magnetic flux passes from south to north. Okay, so these are the important points for the solenoid कि दोनों एंड पे अधिक होगा, अट्रैक्शन बाहर नहीं होता है, और इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो भी लाइन मैग्नेटिक लाइन है वो स्ट्रेट टू द परपेंडिकुलर, स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए हम लोग मानते हैं. ठीक है, अब इसमें इसका निकालें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड वो हम निकाल रहे हैं. Magnetic field due to the solenoid. B due to solenoid. We are taking जो हमारा जैसे ये सोलेनॉइड है, इसके ऊपर ये राउंड रैपिंग है, इसको हम ऐसे कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कट. तो वी आर टेकिंग द लॉन्गिट्यूडनल कट ऑफ सोलेनॉइड एंड इट लुक्स लाइक है. ऊपर से जो कटा हुआ तार है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऐसे ही दिखेगा. ठीक है, नीचे भी जो कटा हुआ वायर है वो ऐसे ही दिखेगा. यहाँ से ऐसे करंट आ रहा था. ठीक है, तो जब करंट यहाँ पर बाहर आउटवर्ड लग रहा है और यहाँ इनवर्ड जा रहा है, तो आउटवर्ड के लिए डॉट और इसके लिए क्रॉस. ये हो गया डॉट, ये हमने डॉट यूज कर लिया, और यहाँ आ गया क्रॉस. ठीक है, इसे कट करने पे ऐसे ही दिखेगा. यहाँ से हम इसका एंड ले लेते हैं. ठीक है, अब इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइंस है. नाउ वी कंसीडर अ क्लोज सरफेस एज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी. अब ये जो हमने एज्यूम किया है एक क्लोज सरफेस जिसमें आधा बाहर है और आधा अंदर है. ठीक है, पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, I current per unit turn, ठीक है, small n number of turn per unit length. ठीक है, we take the longitudinal cross section, we take longitudinal cross section and consider a rectangular loop of length L and breadth B such that
its half portion inside the solenoid and remaining at outside. Okay, now according to Ampere's law, B dot dl is equal to mu naught I. I is the current per unit turn, that is the capital N into I. It is for the closed surface. Now it is, इसको हम लोग ओपन करते हैं. ए बी सी डी हमारा क्लोज सरफेस है. बी डॉट डी एल, हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाएं. पहले ए टू बी, बी डॉट डी एल. इसमें यहाँ सर्कल नहीं लगाएंगे क्योंकि ओपन है. फिर हमने लिया बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए, बी डॉट डी एल. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ए टू बी के लिए ले लें. बट ए टू बी, बी डी एल, angle is 0 degree, therefore it is equal to B into L. We consider it is as a L. ठीक है. Now it is outside and these two are the perpendicular. B to C, B dot dl equal to C D to A is equal to 0 because theta is 90 degrees there, and B dot dl C to D also 0 due to outside. ये हमारा आउटसाइड में. ठीक है, बात समझ में आ गई. हमने सबको खोल लिया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए. अब क्या करना है देखो, अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. देयरफॉर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ए बी सी डी इज इक्वल टू बी इंटू एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. So we have a B equal to mu naught N by L into I. N by L is what? Length, number of turn per unit length. So B is equal to Ni, mu naught Ni. N is the number of turn per unit length. If we, okay, so it is the magnetic field due to solenoid in case of air core. This formula is used for air core. Suppose we are taking an iron core or other relations हमने निकाला है. ठीक है, मान लो कोई अदर मीडियम जैसे आयरन कोर डाल दिया, ये हो गया फॉर एयर कोर. अब लेते हैं फॉर एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम. तो इसके लिए B की वैल्यू होगी म्यू नॉट म्यू आर एन आई. म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू अपॉन म्यू नॉट, जो मीडियम पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पर हम ये लेंगे. तो इससे क्या निकला कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर. म्यू आर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. हैंस मैग्नेटिक फील्ड will increase as we use an iron core
इन स्टेट ऑफ एयर, एयर की स्टेट में बदले में हम लोग ये ले सकते हैं. सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ Ampere's law, that is solenoid. Now we are taking another last example, last application of Ampere's law, that is toroids. That is the toroids. Toroid is the endless solenoid. स्प्रिंग देखा है ना, सॉरी, स्प्रिंग में जब हम स्प्रिंग के दोनों एंड को ऐसे लेके बंद कर दें तो इट इज द एंडलेस सोलेनॉइड. सो इट इज कॉल्ड द एंडलेस सोलेनॉइड. इसका रेडियस आर है और इनर और आउटर मान लेते हैं R2. अब इसको खोल के यदि हम सीधा करें तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ठीक है, वो इसके सरकमफ्रेंस पे होगा केवल. तो इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके सरकमफ्रेंस पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके सरकमफ्रेंस पे होगा. यहाँ मिलेगा अपने को मैग्नेटिक फील्ड, बट आउटसाइड जीरो और यहाँ पर भी जीरो. ये भी हमारा आउटसाइड हो गया, तो यहाँ भी हमारा जीरो होगा. दोनों जगह जीरो मिलेगा, सिर्फ ये इसके सरकमफ्रेंस पे होगा. टोराइड, इट इज एंडलेस सोलेनॉइड. इट इज एंडलेस सोलेनॉइड. ठीक है, the magnetic field found inside the circumference inside the circumference inside the circumference, but B will zero near center and outside. ठीक है, let R1 is the inner radius, R2. Why is it zero? Because no any flux passes outside of the solenoid, outside of the toroid. R2 outer radius. So we are taking the mean, that is R1 plus R2 by 2. It is the mean value of R. Now we apply the Ampere's law. It is already a closed surface, so we should not consider the closed surface. Therefore, by Ampere's law, B dot dl is equal to mu naught I into n. N is the total number of turn, I current per unit turn, okay. So it will be equal to B dl का आ जाएगा 2 pi r, थीटा यहाँ पर 0, mu naught. So B will be equal to mu naught n upon 2 pi r into I, but n upon 2 pi r number of turn per unit length. तो यहाँ लेंथ तो सर्कमफ्रेंस ही होगा ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. ठीक है,
देयरफॉर B इक्वल टू म्यू नॉट NI। यही होता है हमारा टोराइड के केस में। आगे बात समझ में। एम्पियर्स लॉ जस्ट सेम, जस्ट एनालॉग एज अ गॉसेस थ्योरम। जैसे गॉसेस थ्योरम में एक क्लोज सरफेस के लिए था कि टोटल फ्लक्स पासेज थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/μ0 times of the total charge enclosed that surface. As the same Ampere's law is taken as a for the closed surface, and it is equal to the B dot dl. B dot dl is equal to mu naught I total current and close that surface. उसके बाहर कुछ भी करंट है उससे अपने को मतलब नहीं हुआ है। तो ये पूरा वीडियो हमारा एम्पियर्स लॉ पे था। नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो आएगा मैग्नेटिक फोर्स पे, और वो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जो अपने को जानना होगा। ओके, थैंक्स।